Is it audible, guys? Give me 1 minute. Very good morning. Please join session now, everyone. Okay. Everyone, very good morning. Let me know that sound quality, picture quality, everything is fine. सोमनाथ, प्रिया सर, यस, ये सब दिख रहा है ना यहाँ तक? अरे कहाँ गया जी? This is visible up to this point ना? Okay, I think it is visible. Okay. GFG दिख रहा है? G for G. Okay. Okay then. So guys, very good morning. This is Sanjay Rathi, Analog Electronics, and we are dealing with the operational amplifier, and this is part 4. इतना तो KGF का भी पार्ट नहीं है, बाहुबली भी पार्ट 2 में खत्म हो गया था. ये है टोटल पार्ट 10 पार्ट में आएगा. ये हो गया एक सीरीज. ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. अभी तक आपने क्या देखा है? इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, इन्वर्टिंग समर और इन्वर्टिंग ऑप एम्प पे बहुत सारे पॉइंट्स. तो ज्वाइन कीजिए भाई, जितने लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से कर लीजिए. पेन कॉपी कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा. अनमोल, हाउ आर यू? रौनक अग्रवाल, व्हाट इज योर ब्रांच? रौनक, व्हाट इज योर ब्रांच? अनमोल एंड रौनक. EC, ओके गुड. चलो अच्छे हैं सब, EC वाले हैं. तो ये तो जैसे जानते हो कि आप एनालॉग इज इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, स्पेशली फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच. चलिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही हैं. नाउ होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन. अभी अगर आप नए हैं तो प्लीज वॉच द सेशन. इट इज द 4th लेक्चर ऑन एनालॉग. यू कैन कवर. कल 15 अगस्त है, कल भी कवर कर सकते हो, आज भी कवर कर सकते हो. वॉच द 4 lectures, 3 lectures, then this is the 4th one, and it is very easy to understand the concept. I think you are enjoying the operational amplifier, no? IC 741. IC 741. Okay. Now, meanwhile, you can watch the EDC, that is electronic devices and circuit, concepts of the diode, basics of the diodes, so that after that I'm going to start what? Diode circuit. After 5 or 6 classes I'm going to start the diode circuit, where we will discuss rectifier, clipper, clamper. वहां आपको डायोड के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी बाद में. यहाँ भी मैं बताऊंगा, लेकिन और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो आगे सभी, तो दिस इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर. दैट इज माय इंट्रोडक्शन. 24 years of teaching experience. These are my ranks in engineering services exam. AIR 16 in ECE 2005, AIR 21 in ECE 2008, and I have trained more than 1 lakh students for various competitive exams, guys. So this is my Telegram channel. You can join. This is the common Telegram channel for electronics, electrical and instrumentation branch, and that is my channel.
you can scan the QR code and you can join Telegram channel, जहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं. देन ये है आप लोगों के लिए पेन, नोटबुक, वर्चुअल कैलकुलेटर. चेक कर लो. टेबल चेयर पे बैठे हो, ये चेक कर लो. और रेगुलर रहो, पंक्चुअलिटी मेंटेन करो, सो दैट शुड बी नो पेंडिंग वर्क. कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अभी से आप ध्यान दोगे तो 100% दिसंबर और मिड जनवरी यू विल बी एबल टू कवर योर सिलेबस. यू विल गेट सफिशिएंट टाइम फॉर व्हाट रिवीजन ऑल्सो. ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, रेगुलर रहिए, बस आपका हो जाएगा कोर्स कंप्लीट. नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. So in first class we have discussed the property of the operational amplifier, that is the gain is infinite, Ri is infinite, R0 is 0, bandwidth should be infinite. For that gain bandwidth product should be infinite. Okay, and we have discussed the CMRR, that is called common mode rejection ratio. It should be infinite. So what is the CMRR? Today we will discuss. And then we have discussed the slew rate, right? So slew rate, again we will discuss the slew rate, volt per microsecond, that is the unit of the slew rate, right? These are the important properties of the operational amplifier. Then we have discussed the virtual ground and virtual short concept. I think now all are comfortable with the virtual ground and virtual concept. This is applicable in case of negative feedback only. And again in negative feedback, if the gain is very very high, for example 10 to the power 6, or in a particular numerical it is given infinite open loop gain, then you can apply the virtual short or virtual ground process. Okay, again if with the negative feedback the open loop gain is given as 100 or what 50 or what 200, then guys remember you have to apply the exact analysis. So we have dealt with the exact analysis of the inverting op-amp, exact analysis of non-inverting op-amp. We have calculated the error and so on. We have solved a number of questions on that. Okay, then this is all about positive and negative. Then after that, always remember with the positive feedback, virtual short concept is not applicable. In positive feedback, we will solve the questions with different methods. Okay, without virtual short concept. Then ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था. व्हाट इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? Tell me what is the answer. Now this was the question, what is the value of the I? This is the ideal operational amplifier and RL has the two values 10 kilo ohm and 1 kilo ohm. Variable RL is there. Variable RL is there. Tell me. अच्छा तुम मुझे पिक्चर भेज रहे हो, बताओ आंसर क्या है? बताया तो था 0.1 milliampere. Okay, now watch this. This is the RL. Remember, according to this is the ideal op-amp, this is the virtual short concept. So VP is equal to VN is equal to, the first case, one volt. This is 1 volt, right? If this is 1 volt, it is 0 volt. So what is the current in this direction? The current in this direction is 1/1, that is the 1 milliampere. What is the current from the operational amplifier? 0, because the input resistance is infinite. So this 1 milliampere is coming from this side. This 1 milliampere is coming from this side. So first of all, virtual short concept, this is 1 volt, this is 1 volt, 1 milliampere is coming from this side. Okay. Then here
you can find the V naught so that you can find the IL. So what is the V naught? This is a non-inverting operational amplifier. For non-inverting operational amplifier, what is the gain? 1 plus RF by R1 into what? Vs. 1 plus 10 by 1 into what? 1, it will become 11 volt. So V naught is 11 volt, or you can apply the KCL at this point, Kirchhoff's current law. Again, you can find the V naught. You will get the same answer, 11 volt. 1 minus 0 by 1, 1 minus V naught by 10, and you will find the value and you will get the 11 volt. 11 volt is the output voltage. Now, what is the IL? IL will become V naught upon RL. And RL has the different values. Initially 10 kilo ohm, then 1 kilo ohm. So we can find the different values of the IL. Now, what does the I is equal to? Incoming current is equal to outgoing current. This is the IF, feedback current. IF plus IL. IF is fixed. What is the IF? Vs upon R1. Vs upon R1, that is equal to I1. That is the 1 milliampere. This is fixed 1 milliampere. And this is the V naught upon RL. So V naught is 11. In first case, V naught is 11 upon RL is 10. So what is the value of the current? 1.1 plus 1. This is the 2.1. So how many students are getting the 2.1? So Harshita, you are getting the 1.1. That answer is wrong. 2.1. This is clear to you? This is clear to you, Harshita? First 1 milliampere current, because this is 1 volt, 1 milliampere. Operational amplifier, what is the current? 0. That's why this 1 milliampere is coming from this. Value of the V naught is 11. So what is the downward current? 1.1. So what is the total current? 1.1 plus 1, that is the 2.1. Okay. 2.1 milliampere in first case. In second case, change the value of the IL. It will become what? 1 kilo ohm. If the IL is 1, RL is 1 kilo ohm, this current will become 12 milliampere. How many students got this value? बताओ कितने लोगों को मिला था? पियसा पॉल ने तो सही लिखा है. तुम्हारा कृष्णा क्या आया था? तुम क्या लिखे हो? ये खुलता भी है यहाँ पर. That link is क्या ओपन हो सकता है क्या? सही है सर. Okay. 12 milliampere and 1 milliampere. Now what is the logic? Guys, it is a variable RL. It is a variable RL. What is the phase shift here? Phase shift is 0 degree. Why? Because it is connected to positive terminal. So what is the internal diagram? R naught. This is the AVVI. R naught is ideally 0. The complete voltage will come across this AVVI. Now this will provide the relevant current. This will provide. What is the current here? This battery will provide the required current. For example, in first case, it will provide what was the total current? 1.2.1. So 1 milliampere will flow here and remaining will flow here. And then in second case, it will provide what? 12 milliampere. So that is the duty of the operational amplifier, to provide the required current and maintain the output voltage constant at 11 volt. We are changing the value of RL. The current given by this battery is 0. Current given by this battery is 0, nothing. We are changing the RL. The voltage will remain 11 volt and the extra current will be provided by the operational amplifier, and that is the active device. खत्म. यहाँ पर इसलिए देखो, अब energy can neither be created nor be destroyed, and that's why we are giving the supply here 15 volt minus 15 volt. 15 and what? Minus 15 volt. This was the question and this is the answer. Clear हुआ सबको? This question is clear. Okay.
ओके नेहा, नेहा क्लियर है सब कुछ आपको? देखो बाकी लोग तो क्या ईडीसी नेटवर्क से बहुत समय से, जैसे ये आपका प्रियसा पॉल हो गया, राकेश है, और हमारे कृष्णा, कृष्णा का रोज नाम बदलते रहता है, आपको भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, कामिनी आ गई हैं, तो अब आप नए हो, अनमोल, तो क्लियर हो रहा है ना सर? कुछ भी डाउट आएगा बेझिझक पूछना है नेहा, है ना? मतलब जैसे मैं बोलूँ टाइम तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट आ रहा है जैसे, लेकिन यहाँ पे मतलब फोकस इसी पे होना चाहिए, पूछ सकते हो। अब मैं एक और भी काम करूंगा यार, स्लाइड नंबर भी डाल दूंगा ताकि आप लोग को कंफ्यूजन और थोड़ा कम हो। मतलब कोशिश करता हूँ स्लाइड नंबर भी डाल दूं ताकि आप मुझे बोल सको सर वो स्लाइड नंबर 1 में दिक्कत है, 2 में दिक्कत है। 1 2, अच्छा गिग्स फॉर गिग्स के बाजू में डाल देते हैं, ये भी बढ़िया रहेगा। 3 4 हो गया 4। हाँ, अब आ जाओ फोर्थ साइड। एनी डाउट इन एनी स्लाइड्स और एनी नंबर? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, दिस इज द न्यूमेरिकल। तो ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल आएंगे, वर्चुअल शॉर्ट, वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस। तो अब आगे आते हैं, जैसे ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस आपको बोला था, एक टेबल में लिख लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। In case of inverting, the feedback mechanism is what? Voltage shunt feedback. In case of non-inverting, the feedback mechanism is voltage series feedback. In case of inverting operational amplifier, both the input and output resistance decreases. You will learn more about this in a shunt. After feedback, input as well as output resistance decreases as compared to open loop. Or in this case, input resistance increases, output resistance decreases. So already I have given you the formula. Because of the Miller's theorem, both the input and output resistance will decrease. So 1 mega ohm without feedback, with feedback, after feedback the input resistance will decrease, here the input resistance will increase. तो यह मैं फॉर्मूला बता चुका हूं आपको। देन अब आगे आते हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग समर, इसका क्या है आंसर बताओ? यू हैव टू फाइंड द वी आउट, नॉन इन्वर्टिंग समर। तो how we can find, always remember when it is a non inverting summer, यही था ना प्रियसा की और भी कुछ था? एक और था सर, दूसरा क्वेश्चन है सर, उसमें तीन समर। हाँ वो ओके ओके ओके, आई हैव दैट न्यूमेरिकल, आई विल सॉल्व दैट। तो दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग समर। तो if it is a non inverting summer, तो what is the answer? Again this was the assignment. If you are taking the R1 is equal to R3, 2 is equal to R, all R. So always remember, in case of non-inverting summer, you can this is minus, this is plus. Find the voltage at this point. This is called positive terminal voltage. Find the voltage at this point. In case of non-inverting, if something is connected to the non-inverting, always find the voltage at this point, Vp, by applying the KCL. Once we have the Vp, remember, you can apply the virtual short concept, Vp is equal to Vn, right? And then apply the KCL at this point. So KCL at this point means this will become Vp minus 0 by R1, because Vp is equal to Vn. So Vp minus 0 by R1 plus Vp minus V0 by Rf. And finally solve it, you will get 1 plus Rf by R1, that is the gain of the system, into what? Vp. So this is a very, very important one. So always directly you can use this formula. V0 will become 1 plus Rf by R1, the voltage at the positive terminal. Voltage at the positive terminal. So first of all find the Vp and then multiply it with what? 1 plus Rf by R1, you will get the output. So in multiple question use the same concept here. No need to apply the KCL again and again. This is the non-inverting op-amp. For non-inverting op-amp, what is the gain? 1 plus Rf by R1 multiplied with this voltage. इतना सारा लगा है, बहुत बड़े बड़े सर्किट आते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है. फाइंड द वीपी. Just to find the Vp, for example, all the resistors are equal. Already I have given R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to Rn is equal to R. To apply the KCL, what is the current enter into the op-amp? 0. Let this voltage is Vp. You can write the KCL.
Vp minus V1 by R, right, प्लस Vp माइनस V2 by R. अच्छा चलो एक बार लिख लो R1 R2 Vp माइनस V3 by R3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0. तो अगर आपको डिफरेंट रजिस्टर दिया तो डिफरेंट लिखिए, Vp माइनस V1 by R1, Vp माइनस V2 by R2, Vp माइनस V3 by R3 एंड सो ऑन, एंड फाइंड द Vp. Find the Vp in terms of V1, V2, V3, R1, R2 and R3. But if all the registers are equal, guys, if all the registers are equal, then it will become very, very, very easy. This all the resistance are equal, then so all are common. This is the 1, 2, 3. Agar suppose you are going to use the n number of this, so it will become n Vp is equal to what? V1 plus V2 plus V3 plus Vn. So what is the value of the Vp? V1 plus V2 plus V3 plus Vn divided by n. If there are n number of voltages, divided by what? N. Now if you have the Vp, it is multiplied with 1 plus Rf by R1. If you have the Vp, then it is multiplied with 1 plus Rf by R1. तो ये आ जाएगा आपका V0 1 plus Rf by R1 V1 plus V2 plus V3 plus Vn divided by n. Okay, so this is the value, guys. This is the value. For example, if you are going to keep the Rf is equal to n minus 1 R1. If you are going to keep the Rf is equal to n minus 1 times of R1, what will happen? This term will become 1 plus Rf n minus 1 R1 upon R1. This is the R1 plus, oh sorry, this is cancel out, or n, it will become n. So if this is the case, this will become 1, and what is the output? What is the output, guys? N cancel out, and that is the summation of the voltage with positive sign, and that's why it is called non-inverting summer. That's why it is called non-inverting summer. अगर आपने इसको रख दिया Rf is equal to n minus 1 R1, तो ये R1 cancel, it will become n cancel, and this is the answer. Phase shift is 0, that's why it is called non-inverting summer. तो देखो इस क्वेश्चन से क्या सीखते हो पता है? इस क्वेश्चन ये थ्योरी से ये सीखे कि जब भी अगर यहाँ पे बहुत सारा तामझाम लगा है तो फाइंड द Vp एंड मल्टीप्लाई द Vp विद द 1 plus Rf by R1, you will get the answer. You will get the answer. खत्म हो जाती बात. Done. Clear, guys? Non-inverting summer. Yeah, this is the inverting summer. Now this is the non-inverting summer. ये वाला बताओ, ये क्वेश्चन था ना? This was the previous, yes. What is the answer? बाकी लोग बाकी बताओ. A for yes नेहा आ गया आंसर. इजी है ना? इजी था, बहुत इजी है.
तो चलिए बना लेते हैं। देखो, दिस इज द समर, दिस इज द इन्वर्टिंग समर, this is the inverting summer. You can apply the superposition theorem. Let the voltage at this point is V1, V2, and that the voltage at this point is V1. No problem, V1 and V2. If these two voltages are V1 and V2, so you can write the V out is equal to minus R4 by R3 minus R4 by R3 into V1 minus R4 by R3 into what? V2. So this will become minus R4 by R3 V1 plus V2. This is the V out according to the summer. This is the summer, inverting summer. You can write minus R4 by R3 into V2 minus R4 by R3 into V1, and that is the output. Now what is the value of the V1 and V2? Watch this. This is basically a non-inverting operational amplifier. This is the gain. And what is the gain for this? 1 plus RF by R1. This is the RF. So R2 by R1. 1 plus R2 by R1 into V. That is the value of the V1. 1 plus RF. RF is R2. Into what? V1. V in. 1 plus R2 by R1 into V in. This is a non-inverting operational amplifier. This is the inverting operational amplifier. Same input is given. What is the gain? Minus R2 by R1 into V in. So that's why the V2 will become minus R2 by R1 into V in. Add these two. So what is the V1 plus V2? R2 by R1, R2 by R1, V in cancel, and you will get only V in. To put the V in here, so what is the gain? V out by V in is equal to V out is equal to minus R4 by R3 into V in, and that's why V out upon V in will become R4 by R3. यही किया आप लोगों ने, yes or no? Same method. This is the inverting op-amp, this is the non-inverting op-amp, and that is the inverting summer. That is the inverting summer. पता आप यकीन नहीं करोगे, ये जो है ना, ये अभी अभी आया 2024 में, 2024 में या 2023 में अभी आया, आई थिंक भूल गया मैं, 23 या 24 या 25 में, तो 25 में भी हो सकता है, नो आइडिया। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन है, ये मेरी कॉपी में आप देखिए 2012 में मैंने इस न्यूमेरिकल को समझाया है, अपने हिसाब से डिजाइन बना के समझाया था, जस्ट टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जस्ट टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। मैंने यही डायग्राम बना के समझाया और देखो उसी पर न्यूमेरिकल आया। तो जो मैं आपको समझा रहा हूं वो देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है ना, 25-30 टेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी है, इसलिए क्लॉज कंटेंट पे ना बहुत अच्छे से ध्यान देना। जो आ चुका है वो तो आ चुका है, जो आने वाला है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो आ चुका है उसके हिसाब से पढ़ोगे तो आप ठीक है अंडर 500 आ जाओगे, लेकिन जो आने वाला है उसको आपने एंटिसिपेट कर लिया तो आप अंडर 10 आ जाओगे। यही तो सोचना है कि वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं जो आप सोच सकते हो, जिसको आप बना सकते हो। तो वी आउट बाय वी इन, दैट इज द आंसर। इजी क्वेश्चन। नाउ किसी को कोई डाउट भाई? एनी डाउट? तो दिस इज द समर inverting op-amp, non-inverting op-amp. Inverting will give the 0 degree phase shift, it will give the 180 degree phase shift. अच्छा एक बात बताओ, नेहा आप बताओ, सभी लोग बताओ, अनमोल, क्या एक्चुअली ये ऐड हुआ है कि सब्ट्रैक्ट हुआ है? यहां पे एडिशन दिख रहा है V1 प्लस V2, बट एक्चुअली दिस इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। Actually we want to add, it is a summer, but ultimately it is a subtraction or addition of the V1 and V2. Tell me, addition or subtraction? It is a subtraction actually. So how is it possible to make a differential amplifier or subtractor? So we are having the subtractor.
Right? For example, if you want to make the subtractor, we have the adder, summer. Right? If you want to subtract, you want to get this A minus B. So this is a plus minus B. This is also the subtraction. Means if you want to make the subtractor, then this is adder, this is A, this is the another one. Now guys, this is A, this is B. And we are using the adder, but actually we want to subtract. The phase shift of this is 0 degree. If the phase shift of this is 0, it will provide A. Let the gain is 1. Let the gain is 1. It will provide the A. And the phase shift of this is 180 degree. The gain is minus 1. So it will provide minus B. Now add these two. So actually you will get A plus minus B, and that is what A minus B. Now tell me guys, we are adding or we are subtracting? Actually we want to design the subtractor, then it is possible by non-inverting op-amp, inverting op-amp and adder, you will get subtraction. So that was the question. यही question था वो. Now inverting op-amp, non-inverting op-amp, adder. So actually we are not adding, we are subtracting the signal, and that is the basic concept of differential amplifier. तो चलिए अब बनाते हैं differential amplifier. Very important concept, differential amplifier and so on. This is a differential amplifier, linear active device. We are giving the two signal V1 and V2, and for नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, सब हो गया, अभी सब तैयार हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं इसमें से. अच्छा एक बात बताओ, रटना चाहते हो कि समझना चाहते हो? Do you want to mug up or try to understand? ठीक है, रटोगे तो एक दो क्वेश्चन ही रट पाओगे, समझोगे तो हजारों बना पाओगे. ओके देन, चलिए फिर देखते हैं ना. तो व्हाट इज द, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर? तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर मींस आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द सिग्नल. It should be proportional to a difference of the signal only. Then V0 is proportional to V1 minus V2, and V1 minus V2 is called VD. V1 minus V2 is called VD. So this is the constant of proportionality is called difference gain. Constant of proportionality is called difference gain. So under ideal condition, it should only proportional to difference of the signal. So what is the VD here? V1 minus V2. Where the differential amplifier is required? In all control system, the differential amplifier is required. For example, you are going to use the AC in your houses, then watch this. Here is a feedback. Actually, this is the symbol for the summer, but we are subtracting the signal by changing the phase shift. देखो, plus minus. This is the summer, but we are subtracting the signal and we are getting the difference signal here. Difference signal here, or difference, and that will multiply. That will multiply. So this is the VI, that is the difference, and at the end we are getting the amplified signal here. This is the amplification. This is the feedback factor. Now try to understand. I want to set the room temperature at 25 degrees centigrade. Okay. So I am setting the reference at 25 degrees centigrade. This is the reference, and I want to set the temperature at 25 degrees centigrade. But actually the room temperature is 30 degree. So 30 degree. Now with the help of this feedback factor, this is also in terms of voltage. This is the reference is converted into the reference voltage. And this is also converted into the voltage reference, proportional to 30 degree. So there is a difference between the 35 and 30. What is the difference, guys? 5 degree. Now this 5 degree or the respective voltage is amplified,
and it will start the compressor of the AC, and the room start temperature start decreasing. When the temperature start decreasing, it will decrease from 30 to 29, then 28, then 27. When it is 27, it is 25. What is the difference? 2 degree. It will amplify the 2 degree, and then again compressor will start, and again it will reduce the temperature. Finally, it will become 25 degrees centigrade. Now, my dear friend, tell me, what is the difference? The room temperature is 25, our reference is 25. So what is the difference? The difference will become 0. When the difference will become 0, what is the output of the amplifier? 0. Once the output of the amplifier is 0, compressor will stop. So in a fridge, in AC, and in other feedback devices, that is the concept. So we want the difference of the output and reference signal, right? So that we can amplify, and we will get the feedback. That is called what? Negative feedback. तो ये जो पार्ट है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये है आपका एम्पलीफायर. This is the differential amplifier. We are getting the difference and we are then amplifying the signal. So this is the nothing but differential amplifier. So in every control system, differential amplifier is required. In negative feedback, differential amplifier is required, and that's why this topic is very, very important one. तो चलिए आइए, अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ differential amplifier है. Then तो differential amplifier, to what you want actually? We don't want what is the value. We want only the difference. 30 degree, 25 degree, we want difference 5. If it is 40 and I want the reference is 35, so that is the difference. 45, 35, the difference is again 5. So I'm not bothering about what is the actual value, V1 or V2. But I have to focus on what is the difference, V1 minus V2. Okay. अब आ जाते हैं, देखिए जरा इस पे फोकस करना है. That is the V1 minus V2. Linear active devices, output is proportional to difference of the input. That is the V1 minus V2. Ideal condition. This is called ideal condition. Ideal condition, and that is the ideal differential amplifier. Now, how we are going to design it? Okay, again same logic. First of all, take one amplifier. Then second amplifier. Then one summer. Okay. We are giving the input V1, we are giving the input V2, its gain is A1, its gain is A2. You will get A1 V1, you will get A2 V2, and the output will become A1 V1 plus A2 V2. This is the output of this. This is the amplifier number 1, amplifier number 2, and this is the summer, and you will get the output. Okay. Now, if you want to make the differential amplifier, so under ideal condition, A1, let it is 10. A1 is what? 10. And if you are taking the A2 is exactly minus 10 with 180 degree phase shift. 180 degree phase shift. Tell me guys, according to this formula, what is the output? Then you can say V0 is equal to 10 times of V1 minus 10 times of V2, and you will get V0 is equal to 10 times of V1 minus V2. And then we can say the V0 is proportional to what? V1 minus V2. And what is the gain of the system is 10. Gain of the system is what? 10. That is called differential gain. So if you want to design the differential amplifier, you have to choose the two amplifier, one with the phase shift 0 degree, one with the phase shift 180 degree. And what should be the magnitude of the gain? The magnitude of gain should be exactly equal.
If the magnitude of gain is 10 and minus 10, 15 and minus 15, 20 and minus 20, then you can take common, and this is the formula. What is the ideal condition? The magnitude of the gain should be equal, and this is the positive 0 degree phase shift, and this is the 180 degree phase shift. This is the ideal situation, ideal differential amplifier. Ideal differential amplifier. Okay. अब आइडियल क्लियर हुआ, ये गेन ऑलवेज भी इक्वल होना चाहिए. लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हैं? यस और नो, टेल मी. है? मतलब आप एकदम ट्विंस हो. ट्विंस में भी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होंगे. तो जब ट्विंस में फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है, तो आप कभी भी जाओगे ना एम्पलीफायर बनाने, बोलोगे भैया एक एम्पलीफायर देना जिसका गेन 10 है, इसका गेन -10 होना चाहिए. आपको देगा लो ले जाओ 10-10 वाला. प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन है देखो. व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन? A1 is never equal to what? A2. A1 is never equal to what? A2, right? So I can say that A1 is 10, no problem, and A2 is, right, A2 is 9.9999. No doubt it is 10, it is approximately 10, but there is a difference. What is the difference? Everyone tell me, what is the difference between these two? Not equal. So definitely there will be the slight difference between the A1 and A2. So you want to choose the A1 10, but you will get the 10.001, or you will get the A2 is equal to -9.999. So never equal to exactly 10. There is a slight difference. If this is the case, then what is the answer? How we are going to solve this question? If A1 and A2 are not equal, this is the situation. If A1 and A2 are not equal under practical condition, then remember, this is a very important derivation. Now we have two signals. One at V1, this is the V2. Okay. The difference between V1, this is the V1 and this is the V2. The difference between the V1 and V2 is VD. So what is the VD? V1 minus V2. And now we have the output. And how we can solve? Then let the VD is V1 minus V2. Then take one common value. Common means average value. What is the average value of the V1 and V2? Average or mean value? Common value. This is given by VC. Add these two divided by 2. This is called what? Common value or average value or mean value. So this is the VC. Now you can write the V1. This gap is VD by 2. This gap is VD by 2. Because the total difference is VD, so half difference is VD by 2, VD by 2. Now you can write the V1 in terms of VC plus VD by 2. VC and VD. Similarly, you can write the V2, VC minus VD by 2. The total gap is VD. So VC minus VD by 2. So this is the VD, V1 minus V2. That is the, this is the equation number 1, equation number 2. Then this is 3, this is 4, this is 5, and this is 6.
तो ये ना इसलिए बनाया कि ताकि इजी समझ में आ जाए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन V1 and V2? VD, half difference is VD by 2, VD by 2, and that is called the common level. So common level you can write. Now put these values 5 and 6 in 2. Put 5 and 6 in 2. तो जब 5 and 6 को 2 में रखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए जरा. You will get V0 is equal to A1 VC plus VD by 2 plus A2 VC minus VD by 2. Now take the VD common, so you will get A1 plus A2 by 2 into VD. And you will get A1 plus A2 into what? VC. You will get this type of output. You will get this type of output. Now this is the equation number 7. So first of all, write down the V1 and V2 in terms of VD and VC, and then arrange, put the value, and finally you will get, this is actually the output, A1 V1 plus A2 V2. Now put the value of V1 and V2, and finally you will get this term. Now in this term, this first term is depends upon the VD. So we want, this is the wanted output should be proportional to what? VD, and this is the constant, and this is unwanted. ये है सलमान खान और ये है विलेन, unwanted, right? So V0 should be proportional to VD, and what is this? Common signal. So this, there are two terms, one depends upon the difference, one depends upon the common signal. One depends upon the common signal. So now what is the ideal condition? This is called, what is the written here? This is called V0 is equal to, this is the difference gain ADVD, this is the wanted term, and here we are giving the ACVC, this is called common signal gain. Common signal gain ADVD plus ACVC. So what is the AD here? This is a very important formula. Numerical you have to find A1 plus A2 by 2. Always remember this is the formula. This is the equation number 8. A1 minus A2. This is the equation number 9. Compare. What is the AD? A1 plus A2 by 2. Now what is the AC? A1 minus A2. A2. अरे यहाँ का माइनस कहाँ गया? माइनस आ गया. माइनस. सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है. A1 माइनस A2. किसी ने बोला नहीं क्या? लिखा है क्या कमेंट्स? देखो जरा. A1 माइनस A2. क्लियर है ना? ये को ऐड कर रहे हो ये माइनस आएगा, माइनस A1 माइनस A2 by 2, and this is the A1 plus A2. तो AC you will get equation number 10. AD A1 minus A2 by 2, AC A1 plus A2. AD wanted, AC unwanted. Why? Because we want output should be proportional to difference of the signal only. Therefore, ideal value of AC. Ideally, AC should be equal to what? 0. For example, in our ideal condition, I am taking the A1 is equal to 10, A2 is equal to minus 10. बताइए, A1 is equal to 10 and A2 is equal to minus 10. Guys, tell me what is the value of the AD and what is the value of the AC. So when I am putting the 10 and minus 10, AD will become 10 minus of minus 10 upon 2, it will become 10. And AC will become A1 plus A2, 10 minus 10, it will become 0. And that is called ideal situation. Ideal.
अरे अब if the A1 and A2 are magnitude wise equal, then we are getting the ideal case. Already we have the idea. This is the ideal condition. This is the ideal condition. No problem. This is the ideal condition. When the A1 and A2 are minus plus 10 and minus 10, then the AC will become 0. But A1 and A2 are not equal. That's why we have to solve. We are writing the A1 V1 plus A2 V2. We are converting into in terms of what difference signal, in terms of what average signal, common signal. We are getting this output, practical output. Here the output depends upon the two things, VD and VC. This term is called difference gain AD. This term is called common mode gain AC. Ideally, the common mode gain should be equal to what? 0. That is the case, guys. Common mode gain AC. चलिए बताइए, अब कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? टेल मी गाइस. स्क्रीन पर फोकस कर पाते हो ना सबके सब? सर डाउट था मेरा एक. पूछो भाई. हेलो सर. अरे कोई डाउट है? एनी डाउट कि आगे बढ़े? हेलो आराम सर. से देख लो भाई. ये है दो सिग्नल, कॉमन मोड सिग्नल, एंड ये फॉर्मूला याद रखिए, AD इज इक्वल टू A1 माइनस A2 by 2 एंड AC इज इक्वल टू A1 and A2. सर आवाज आ A1 रही is है? the non-inverting gain, A2 is the inverting gain. तो in a differential amplifier you have to find the A1 and A2. एक इन्वर्टिंग गेन आएगा, एक नॉन इन्वर्टिंग गेन आएगा, उससे आपको AC निकालना होगा, उससे आपको AD निकालना होगा. हाँ एरर है ना, वो एरर सिग्नल. अभी हम लोग AC के बारे में और डिस्कस करेंगे. अप टू दिस पॉइंट एवरीथिंग इज फाइन. Now tell me guys, if I am having the two amplifier, what is the ideal value of the AC? 0. So V naught is equal to AD VD plus AC VC. Right? This is unwanted. So ideally AC should be equal to 0.
Now I am having the two amplifier, guys, two differential amplifier. Differential amplifier 1, differential amplifier 2. For one differential amplifier, AC is let 0.1. For other differential amplifier, AC is 10. Tell me which one is better. Tell me which one is better. Tell me which one is better. 0.1. Ideally, it should be equal to 0. So practically, it is what point? It should be equal to nearly equal to 0. Okay. Now, 0.1 is the better one. Now, अब देखो, AC is unwanted, but AD is what wanted. For this, AD is 10. Or for this, AD is 10 to the power 4. Now tell me which one is better. Now which one is better? भैया सुनो, मारुति 800 ऑल्टो चलाते हो? ऑल्टो छोटी सी कार, ऑल्टो है, ऑल्टो चलाते हो और ऑल्टो चला के क्या बोलते हो? देखो सर बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, देखो सर क्रेन वाला कितना पॉल्यूशन कर रहा है। अरे मेरे भाई, ऑल्टो में आप इधर से उधर बस जाते हो और क्रेन क्या कर रहा है? पूरा जेसीबी पूरा का पूरा रोड बना रहा है, तो पॉल्यूशन किस में ज्यादा होगा? रोड बनाने वाले में। उसकी कैपेसिटी भी तो देखो। इट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब है एडी के कंपैरिजन में कितना है। तो एडी के कंपैरिजन में तो आप ये नहीं बोल सकते विच डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज बेटर। एसी को देखते हो तो आप बोलते हो ये 0.1 है, ये 10 है, तो ये बेटर है। इसको देखते हो तो बोलोगे ये बेटर है। तो आपका क्या है? दैट इज कॉल्ड रेशियो, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, दैट इज द AD अपॉन AC। AD upon AC, mod of AD upon mod of AC, and ideally AC is 0, so CMRR is infinite on practically as large as possible. Practically it should be as large as possible. Should be as large as possible. कैसे होगा बताओ? अब as large as possible, तो in first case tell me what is the CMRR, everyone? The CMRR in first case is 100, 10.1, this is the 100. Or in second case, what is the CMRR? 1000. Now tell me which one is better? कौन अच्छा है? Second. Which one is better? कौन अच्छा है? पहला वाला, दूसरा वाला? Second. On the basis of CMRR, we can compare. It should be as large as possible. So in the second case, we are getting the 1000. In first case, we are getting the 100, and that's why the second differential amplifier is better than the first one. Okay. तो देखो, आपको ऐसा समझना चाहिए कि आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स है, मान लो 12th में फिजिक्स, राइट, फिजिक्स एक को मिला 80, एक को मिला 90। टेल मी गाइस विच वन इज बेटर? आप बोलोगे सर ये वाला, पहला वाला। अच्छा भाई, फिर दूसरे में आ जाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको मिला 90, इसको मिला 70। आप बोलोगे सर केमिस्ट्री के बेस पे तो ये बढ़िया है। फिर तीसरा आ जाओ, मैथ्स, इसको मिला 60, राइट, इसको मिला 80। अब बताओ विच वन इज बेटर? कौन बढ़िया है? आप बोलोगे सर फिजिक्स इज नॉट द फिगर ऑफ मेरिट, केमिस्ट्री इज नॉट द फिगर ऑफ मेरिट, मैथ्स इज नॉट द फिगर ऑफ मेरिट। व्हाट इज द फिगर ऑफ मेरिट? PCM। तो PCM इज द फिगर ऑफ मेरिट। तो 80 प्लस 90 प्लस 60 कितना हो गया भाई? एक दीजिए, मेरे तो कैलकुलेशन ही खत्म हो गई लगता है। 90 प्लस 80 170 प्लस 60 230, और 90 प्लस 80 दैट इज व्हाट 170, दिस इज द 240। सेकेंड वन इज बेटर देन द फर्स्ट वन। तो
In a 12th class, the figure of merit is not the physics, not the chemistry, not the maths. The figure of merit is what? PCM. Are you getting my point? What is the figure of merit means? We can compare the 2% or 3% or 4% on the basis of that. So this is the marks of PCM. Similarly, in case of the differential amplifier, the figure of merit is not the AD, that is the difference gain, not the AC, that is the common mode gain. What is the figure of merit is? What is the figure of merit is? CMRR. On the basis of CMRR, we can compare the two differential amplifier. So this is CMRR is called figure of merit of differential amplifier. CMRR is called figure of merit of the differential amplifier. FOM, figure of merit of differential amplifier. Differential amplifier. Okay. In dB you can also calculate. It is called 20 log of AD by AC. Ideally it should be infinite, but practically we are getting what a very high value, that CMRR 10 to the power 6. Typical value, typically this is a very high value of the CMRR. Put in the dB, it will become 20 log of 10 to the power 6. Log base to 10, it will become 120 dB. So what is the typical value? 120 dB. It is a very high value of the CMRR. So CMRR is common mode rejection ratio. Okay, बिल्कुल सही, तुमने सही स्पेलिंग लिखा है. अरे मैं लिख नहीं रहा हूँ यार, कितना लिखूं समझ नहीं आता है. देखो अब मैं ये देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को ऐसे रगड़ दिया. ये समझ आ रहा है ना डिफरेंशियल एम्पलीफायर? इज इट क्लियर? दिस इज क्लियर टू यू? ये भी समझ आ रहा है? CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. So that is in dB, typically 120 dB. Okay, then if it is in log, always remember this will become 20 log of AD minus 20 log of AC. So AD that is in dB and AC that is in dB. dB. Okay, so this is the CMRR. So finally, this is the CMRR. Always remember, in a practical differential amplifier, you will get the two terms. One is called ADVD wanted, one is called ACVC unwanted. Right? It will affect the output signal, but normally we are keeping the AC as low as possible. If the CMRR is 1000 or more than the 1000, we can neglect the effect of this term. Okay, Anmol? Definitely it will affect the performance. आपको बताओ अनमोल, AC की आवाज आ रही है? मेरे बाजू में AC चल रहा है, आपको आ रही है आवाज? हाँ या ना तो बोलो. नो. आपके कमरे में कुछ चल रहा है? आपके कमरे में फैन वैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ. अरे फैन चल रहा है. हाँ. कामिनी, आपके घर में बारिश हो रही है बाहर? कामिनी बोल रही फैन नहीं चल रहा है. तो बारिश हो रही है बाहर? बारिश हो रही है. तो क्या आपको बारिश की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बताओ आपको. अब बोलोगे सर आप जैसे ही बोले तो मुझे तो बारिश की आवाज सुनाई दे रही है. इससे पहले क्या था? इससे पहले आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, है ना? और क्यों भाई, आपके कमरे में फैन चल रहा था, उसके बावजूद भी अनमोल किसकी आवाज आ रही थी आपको? बताओ ईमानदारी से. आप बोलोगे सर फैन की आ रही थी तो मेरा पढ़ाना तो बेकार हो गया. किसकी आवाज आ रही थी एवरीवन? मेरी आ रही थी भैया. आप मेरी जो आवाज है ना वो इतनी ज्यादा है और जो पंखे की आवाज है वो इतनी कम है, तो क्या वो आपकी पढ़ाई को इफेक्ट कर रहा है? क्या वो अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा. अगर वो अफेक्ट कर रहा है देन यू हैव टू यूज द हेडफोन्स. उसके बावजूद भी अफेक्ट कर रहा है तो दरवाजा बंद कर दो, फैन बंद कर दो, AC चालू कर दो. इज इट क्लियर? तो जब भी दो चीज होती है तो जो दूसरा जो नॉइज है वो तब तक टॉलरेबल है जब तक आपके मेन चीज को अफेक्ट नहीं कर रहा है. दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू अनमोल? तुम हेडफोन लगा लो चाहे जो लगा लो, आप 100% नॉइज को अवॉइड नहीं कर सकते.
बस आप इतना कर सकते हो कि उसको कम कर लो ताकि इसका रोल बढ़ जाए। ओके देन, दैट इज द कंपैरेटिव टर्म। जो आपने पूछा था ना सर कैसे अफेक्ट करता है, तो ऐसे अफेक्ट करता है। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल एज कंपेयर टू एडी। दिस टर्म शुड बी एज लो एज पॉसिबल एज कंपेयर टू एडी, and that is possible with the high value of the CMRR. Now, last but not the least, अच्छा यार, अब आप लोग अपने पीसीएम के मार्क्स भी बता ही सकते हो। वैसे तो छोड़ो, हटाओ, 12 के मार्क्स से क्या करना। बात खत्म हो गई, पास्ट खत्म हो गया, अभी तो हम नई नई इमारत लिखेंगे ना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम लिखेंगे। क्या था, कुछ गाना है ना, कल चलेगा सब 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त का माहौल बन चुका है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में, ठीक है। और भैया 15 अगस्त का मतलब है भाई, ये याद करो कि कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी बलिदान दिया है, तब जाके आपको ये आज़ादी मिली है और आप आज़ाद भारत में अपना करियर बना पा रहे हो। सोचो जरा, आप आराम से पढ़ रहे हो, आराम से ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो होगी कल है क्लास, एनालॉग की नहीं है, ईडीसी की क्लास है। पता नहीं कैसे एनालॉग की क्लास नहीं रखे हैं इन्होंने, क्या करने वाले शेड्यूल, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक एनालॉग की क्लास नहीं है ना, शेड्यूल नहीं है ना। कोई बात नहीं, ईडीसी करना हो तो आ जाना ट्रांजिस्टर। नाउ सीएमआरआर, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में एक और टर्म आता है, अब मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूं। एसीवीसी, ये एरर है, राइट, ये एरर है। तो समटाइम्स इट इज आस्क्ड व्हाट इज द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर? इट इज अनवांटेड, इट इज वांटेड। तो परसेंटेज एरर विल बिकम एसीवीसी अपॉन व्हाट, एडीवीडी into 100%. But remember, what is the CMRR? AD by AC. That's why this will become CMRR. 1 by CMRR, that is also represented by rho. 1 by CMRR or 1 by rho into VC upon VD into 100%. Into 100%. So this is the formula. More will be the CMRR, less will be the error. Error decreases. So this is the error. Calculate the error, VC upon VD into 100%. Okay, then क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए भाई, एरर भी कैलकुलेट कर लिए, एरर भी आ गया। और याद रखना ना, जब भी एरर कैलकुलेट करना हो तो एसी याद रखिएगा, कॉमन मोड गेन है, एडी डिफरेंस गेन है, वीसी इज इक्वल टू वी1 प्लस वी2 बाई 2 एवरेज वैल्यू, कॉमन वैल्यू, वीडी इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस सिग्नल, ये सब है। दिस इज द परसेंटेज एरर। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं भाई, बताओ जरा, बोलो। Read question carefully and give me the answer. If the differential voltage gain and the common mode voltage gain of a differential amplifier are 48 dB and 2 dB, then its common mode rejection ratio is. इससे इजी क्या क्वेश्चन पूछेगा, बताओ क्या है आंसर? यस सक्सेना, तुमको स्पीड में तुमको अवार्ड मिलेगा। फेरारी दौड़ाए हो 200 की स्पीड में, लेकिन फेरारी कहाँ कराई है इसका अंदाजा है आपको? 46 माइनस होगा सर, लॉग में है ना। क्या बोल रहे हो, आवाज ही नहीं आ रही, क्यों बोल रहे हो? और 46 है। अरे ऑडिबल ही नहीं है मेरे भाई, साउंड कम हो गया है क्या मेरा? रुक जाओ जरा, फुल साउंड है यहाँ तो। यस, समझ गए। कहाँ गए यस सक्सेना का कमेंट्स, कहाँ गया? समझ गए यस? देखो, एक्चुअली इट इज इन गिवन इन डीबी, तो ऑलरेडी आई हैव गिवन ना 20 log ऑफ एडी बाई एसी
if it is given in dB, always subtract it. It is the 48 dB minus 2 dB. What is the answer? 46 dB. This is the answer. तो कई लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, ये रॉन्ग है, ये आंसर. ओके, चलिए आगे बढ़ते, कोई बात नहीं. देखो ये आ गया. V1 and V2 are the input voltage of an instrumentation amplifier. Instrumentation amplifier, that is another name for differential amplifier, because it is used in instrumentation and so on. So that is called instrumentation amplifier. The output of the instrumentation amplifier is found to be 100 times of V1 minus V2 plus 10 to the power minus 4 times of V1 plus V2 by 2. Okay, तो आपको आउटपुट लिखा हुआ है 100 times of V1 minus V2 plus 10 to the power minus 4 times of V1 plus V2 by 2. Okay, the gain means what? Wanted gain, and the common mode rejection ratio of the instrumentation amplifier respectively are. गेन कितना है? गेन का मतलब यहां पर जो गेन का मतलब होता है वांटेड गेन. वांटेड गेन मतलब डिफरेंस गेन. तो व्हाट इज द डिफरेंस गेन एंड व्हाट इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो? कैलकुलेट, और you have to find the CMRR in dB and gain, normal without dB. It is not given in the dB. The gain is given in the 50, 100, 50, 100. प्रियसा पॉल, देखिए आपके गेट में गिफ्ट आया क्या? इतना अब यार सही में पता चला, वहां देख रहे. चलिए आपने सही जवाब दिया है. दिस इज द 100 एंड व्हाट? अरे बाकी लोग भी बोल दो. डी 120. बहुत सही. देखो एक्चुअली ये क्या किया, कंफ्यूज कर. इट इज नथिंग बट वीडी, तो यू विल गेट द एडी वीडी प्लस एसी वीसी. तो व्हाट इज द वीडी? इट इज द वांटेड. एडी इज 100. व्हाट इज द एसी? 10 to the power minus 4. तो व्हाट इज द CMRR? 20 log of AD upon AC, 20 log of 10 to the power 6, that is nothing but 120 dB. 120 dB. बहुत सही. ठीक है, 100 and 120 dB. तो ये तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. यस, इज इट क्लियर? देखो तो एकदम फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लगाया सॉल्व हो गया, फॉर्मूला लगाया सॉल्व हो गया. कर लीजिएगा सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. नाउ आकाश, अरे आकाश कोई है क्या? अनमोल, नेहा, राकेश. राकेश के कोई कमेंट्स नहीं आ रहे. राकेश है कि नहीं क्लास में? यार ये तो मुझसे, हाँ हो ना. ओके चलिए अब आगे आते हैं. भाई मैं सबको याद करते रहूंगा, बुरा मत मानिएगा. कभी यस सक्सेना आएगा, कभी अभी रौनक अग्रवाल से भी मैंने ब्रांच पूछी थी. रौनक, इज इट क्लियर टू यू एवरीथिंग और इज इट योर फर्स्ट क्लास? इज इट योर फर्स्ट क्लास? ओके, इट इज योर फर्स्ट क्लास. तो माय डियर, टुमारो वी हैव नो क्लास, मतलब एनालॉग की क्लास नहीं है. ठीक है रौनक, दिस इज फॉर यू आर कंफर्टेबल विद द हिंदी? हिंदी जानते हो थोड़ा कि अच्छे से जानते हो? कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हो? हाँ तो भाई कल 15 अगस्त को छुट्टी है, लेकिन आपकी छुट्टी नहीं है. ये चौथा लेक्चर चल रहा है. 3 हुए हैं लेक्चर, 2-2 घंटे मतलब 6 घंटे. 1.5 की स्पीड से देखोगे तो जल्दी कवर हो जाएगा 4 घंटे में. आराम से पढ़ना, समझ के पढ़ना. कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना. तो आपको जो भी 2 दिन का ऑफ मिल रहा है, कोर्स कंप्लीट कर लो ताकि एक सब्जेक्ट आपका लाइन पर चलता रहे. दिस पॉइंट इज क्लियर? जो भी नया स्टूडेंट आया है उससे मेरी रिक्वेस्ट है, अरे रिक्वेस्ट तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरा ऑर्डर है कि आप ढंग से करो ताकि मेरी आने वाली क्लास को आप एंजॉय कर सको. ओके तो कर लेना. कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना.
अब आते हैं दूसरा, देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एरर पे आ गया। व्हाट इज द एरर? ये असाइनमेंट है, चलिए बना लेना। मैंने फॉर्मूला बता दिया है, कैलकुलेट द एरर, कैलकुलेट द एरर। Now, how we can design the differential amplifier actually? How we are going to design the differential amplifier? There is a one way to design the differential amplifier. Already we have solved one question. Now, is there is any other way? Now watch this. Okay. This is the differential amplifier, guys. Right? You can. This is the inverting operational, non-inverting operational amplifier. It will provide you the 0° phase shift. This is the inverting operational amplifier. It will provide you the what? 180 0° phase shift. This will provide you the 180° phase shift. Then add these two, and you will get the output. And output should be proportional to what the percentage of the output should be proportional to the difference of the input. Now tell me, guys, when I am using this amplifier, tell me what is the gain of the amplifier? The gain of this amplifier is minus R2 by R1. This is the A2 minus R2 by R1. And what is the gain of this amplifier? Tell me, these two gain are same. These two gain are same, or there is the difference between the A1 and A2? Is there is a difference between the A1 and A2? Why? That is the gain. This is the first basic amplifier. The gain is 1 plus R2 by R1. What is this? R2 by R1. So there is a difference. Mod of A1 and mod of A2 are not exactly equal. Not equal. So once you will get the idea, तो मैं इसको बोल दूं, this is the differential amplifier. Find the CMRR. We can find 1 plus R2 by R1. R2 is given, R1 is given, R2 is given, R1 is given. Find the A1, find the A2, find the AD, find the AC, and find the CMRR. Finish. If it is asked in dB, apply the 20 log of that. 2 marks question. बन सकता है? Yes or no? Tell me. So that is the question, guys. This is the question. ये हो गया आपका. So solve it and find the CMRR. Find the CMRR. This is the adder. Adder को छोड़ दो. Adder की जरूरत नहीं पड़ती. ये. ओके. अब देखते हैं. चलो इसको तो छोड़ो. अब आते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन आता है कि कैसे बनाना है डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो एक्चुअली वी आर डिजाइनिंग द डिफरेंशियल एम्पलीफायर बिकॉज व्हाट इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर? लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट. Linear integrated circuit. So no need to connect the two amplifiers. One is inverting, one is non-inverting, then the summer. Already it is a linear integrated circuit. We can apply the superposition theorem. With the help of single operational amplifier, it is possible to design the differential amplifier. Give the one input to the positive terminal, one input to the negative terminal, and that is the perfect differential amplifier. And output should depends upon the difference of the input. That is the V1 minus V2 only. And how is it possible? And what is the output of this diagram? Everything we are going to discuss. This is the differential amplifier, guys. So in this case, we have to find V0, AD, AC, CMRR, and prove that if for this particular diagram, prove that if Rf by R1 is equal to R3 by R2, that this is the R3, Rf by R1 is equal to R3 by R2, Rf by R1 is equal to R3 by R2, then
CMRR is infinite. Ideal condition. CMRR is infinite. So this is the differential amplifier, this is the RF, this is the R1, and just I am changing the value. This is the V1, this is the V2. For non-inverting terminal, I am using the V1. For inverting terminal, I am using the V2. Find the Vout, find the AD, find the AC, find the CMRR, then give the condition. If RF by R1 is equal to R3 by R2, AC is 0, CMRR is infinite. That is the 20 mark question. But this is for engineering services mains or what civil services examination. It is a 20 mark question. लेकिन इसकी जो थ्योरी से ना आपके सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. तो दिस इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर बाय यूजिंग सिंगल ऑप एम्प, बाय यूजिंग सिंगल ऑप एम्प. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, हाउ टू फाइंड द एडी एंड एसी गाइस. आई एम गिविंग यू द वेरी सिंपल मेथड. First remember, this is the R3, this is the V1, this is the V2, RF, R1, R3, R2. This is the differential amplifier, and solve करना है. Then first apply superposition. The output is the V01 and V02. So first consider the V1, then make the V2 is equal to 0. Then second consider the V2, make the V1 is equal to 0. So first of all, let V2 is equal to 0. Okay. If you are going to make the V2 is equal to 0, make it short circuit. It is a non-inverting operational amplifier. Just to find the gain of the non-inverting operational amplifier, I have given you the hint. Find the VP at this point, and that VP is multiplied with the 1 plus RF by R1, because this V2 is 0, this is grounded. So output will become 1 plus RF by R1 into what? VP. Always remember, if you have the value at this point, it is multiplied with the 1 plus RF by R1, you will get the output. And this is the output number 1. What is the VP? What is the current enter into the operational amplifier? 0, because it is ideal op amp, not ideal differential amplifier, but it is an ideal operational amplifier. So ideal operational amplifier, what is the current enter? 0. So according to the potential divide rule, what is the potential at this point? You can find the potential divide rule. So VP will become R3 upon R2 plus R3, R3 upon R3 plus R2, or R2 plus R3 into what? V1. This is the fourth equation. Put 4 in 3. You will get V01 is equal to 1 plus RF by R1 into R3 by R2 plus R3 into what? V1. ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम. We got the value for V1. What will be the output? So V01, and very easy to recall it. Very easy. कैसे? For non-inverting operational amplifier, what is the gain? 1 plus RF by R1. So this is the 1 plus RF by R1 into VP. So into VP. What is the VP? Voltage division rule. R3 upon R2 plus R3 into VI or V1. So in one step you can write. कितने लोग लिख सकते हो आप दोबारा? What is the gain? 1 plus RF by R1 into VP. What is the VP? R3 upon R2 plus R3. R3 upon R2 plus R3 into V1. So this is the answer. And that is the output because of non-inverting terminal. Now, second, superposition theorem, let V1 is equal to 0. V0 will become V02. Right?
since this is 0. Vp, what is the Vp? R3 upon R2 plus R3 into V1, but the V1 is 0, that's why the Vp is also 0. So when the Vp is 0, you can remove this portion. And Vp is connected to what? Ground. Vp is connected to ground. Since Vp is equal to 0. And this is the V2. It is a nothing but inverting operational amplifier. For inverting operational amplifier, what is the gain? Minus R2 by minus Rf by R1 into what? V2. So देखिए, we have the output for V1. This is the equation number 5. This is the V0 one. And we have the output because of the non-inverting inverting terminal. That is the equation number 6, 7 and 8. Now we have the two outputs. So what is the overall output? So overall output is V01 plus V02, and that's why for this amplifier, the overall output will become V01 plus V02, and it is very, very easy to recall. Directly I am going to write V01. Non-inverting gain is 1 plus Rf by R1 into Vp. 1 plus Rf by R1 into Vp. What is the Vp? R3 upon R2 plus R3 into V1. R3 upon R2 plus R3 into V1. Then V02, because of the non-inverting terminal, minus Rf by R1 into V2. Minus Rf by R1 into what? V2. हो गया आउटपुट. कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, डायरेक्ट लिखिए आप, सीधा एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये आपका. इन वन स्टेप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस. इन वन स्टेप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ये ऐसे लिखते हैं, एक ही स्टेप में लिख दे. तो ये सुपरपोजिशन मैंने लगाया है, नो डाउट 2 स्लाइड्स यूज किया, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वन स्टेप में सीधा. बहुत सारे आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन. इन वन स्टेप यू कैन राइट with the help of superposition theorem. अब जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम देखते हो तो यहां पर देखो V0 इज इक्वल टू ना, ये जो है ना A1 V1 है, ये वाला पूरा A1 है, ये A1 है, और प्लस A2 V2. तो जो आपका जो ये है ना A2 है, तो आपका जो A2 हो गया वो हो गया माइनस Rf बाई R1, और A1 इतना है. A1 ये हो गया, A2 भी आ गया, A1 भी आ गया. Now if you have the A1, you have the A2, you have the A1, you have the A2, can you find the AC or AD? Yes. Now I am having the value of the A1, I am having the value of the A2, then you can find the AC. What is the AD and AC? AD is equal to A1 minus A2 by 2. A1 minus A2 by 2. What is the A1? 1 plus Rf by R1 into R3 upon R2 plus R3. This is the A1. 1 Rf by R1, R3 upon R2 plus R3. What is the A2? Minus minus, it will become plus Rf by R1 upon 2. Upon 2. This is the AD. What is the AC? A1 plus A2. You can write 1 plus Rf by R1, R3 by R2 plus R3, minus Rf by R1. This is the A1, this is the A2. A1 plus A2. अब वैल्यू दी हुई है तो डायरेक्ट निकाल लो AD एंड AC एंड देन फाइंड द CMRR. No need to write,
you can find the CMRR directly by AD by AC. तो ये देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, with the help of the superposition find the V out. V out has the two terms, one in terms of V1, one in terms of V2. The coefficient of the V1 is called A1, the coefficient of the V2 is called A2. Get the value of A1, get the value of the A2. Then you can find the AD. AD, remember the formula A1 minus A2 by 2. And that is the formula. What is the AC? A1 plus A2, that is the formula. तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया. इक्वेशन नंबर आ गई 8, ये आ गई इक्वेशन नंबर 9. This is the equation number 10. Compare with the 10, you will get the A1 and A2. Then equation number 12, find equation number 13. Then this is the AC 14 and this is the 15. ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ. देन इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू. अब बताओ क्या क्या पूछा था भाई क्वेश्चन में. 25 marks. Find the V naught, already we have calculated. Find the AD, already we have calculated. Find the AC, already we have calculated. Find the CMRR, yes. Now, prove that if the RF by R1 is equal to R3 by R2, then the CMRR is infinite. तो बताइए अनमोल, रौनक एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, CMRR इनफाइनाइट होगा तो AC की वैल्यू क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द AC? If the CRR is infinite, then what should be the value of AC? If the CMRR is infinite, the value of the AC should be equal to what? 0. और ये देखिए, this is the formula for the AC. तो अब जो अगला लो लास्ट वाला जो प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ करेंगे हम. CMRR, for CMRR tends to infinity, AC should be equal to what? 0. ये देखो आपके पास ये इक्वेशन है ना, equate it to 0. Equate it to what? 0. तो equate it to 0 और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो यार. इसमें मैं थोड़ा वीक हूं ना, मेरे को जल्दी से समझ नहीं आता कैलकुलेशन. जो करना है कर लो, इसको 0 करो. ठीक है, चलो करते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा. इक्वेट इट टू 0 AC. आप जब मैंने इक्वेट ही कर दिया तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको यार? ये बड़ा लफड़ा वाला काम है. चलो कुछ नहीं, R1 प्लस RF बाई R1. बताओ भाई, कर करा दो जल्दी से. इसको इक्वेट करा 0 से और इसको सॉल्व करना है. जितना आप मेथड लगा सकते हो, जितना इजी तरीके से इसको सॉल्व करो, कंडीशन निकालो क्या होगा. देखो ये R1 तो गया 0 हो गया, और इधर आ जाएगा ये R1 R3 RF R3 and this is multiplied here minus RF R2 minus RF R3 is equal to what? 0. Because this R1 is common, it will become 0. अब और देख लेते हैं. RF R3 cancel out. R1 R3 is equal to RF R2. तो यहां से तो प्रूफ हो गया RF by R1 is equal to hence proved. हो गया. इज इट क्लियर? दिस इज क्लियर टू यू. जो AC का फॉर्मूला आया है उसको इक्वेट कर दो 0 से, देन यू विल गेट द कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन? RF by R1 is equal to what? R3 by R2, then AC will be 0. तो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आए ना, आपको सबसे पहले रेशियो चेक करो. बताओ, जैसे ये 10 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है. बताओ व्हाट इज द CMRR फॉर दिस डायग्राम?
What is the CMRR for this diagram? First check the ratio, 10 by 1, 100 by 10. So CMRR, RF by R1 is equal to R3 by R2, satisfied. If it is satisfied, directly you can say the AC is equal to 0, CMRR is infinite, and output is ADVD only. Output is ADVD only. Right? This is R3. So what is the, remember, VD is what? Non-inverting terminal voltage minus inverting terminal voltage. Then you can directly write AD into what? V1 minus V2. We can directly write this value, but what is the value of AD? What is the value of the AD if this ratio is satisfied? Now, my dear friend, I have the formula for AD also. Where is the AD? Oh my God, 1 minute. अच्छा, कॉपी नहीं किया मैंने, उसको डिलीट मार दिया. AD गायब हो गया, डबल लिखना पड़ेगा मुझे. Oh no. कोई बात नहीं, डबल मेहनत हो गई मेरी तो. क्या आपको याद है क्या फॉर्मूला? मैं तो जैसे जैसे पढ़ाते जाता हूँ आगे आगे वैसे वैसे भूल जाता हूँ, लग रहा है मुझे. शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया. चलिए देखते हैं कितना याद है. देखो मैं ना स्लाइड कॉपी करने से पहले ही मैंने डिलीट मार दिया. कोई बात नहीं, चलता रहता है ऐसा. अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला फॉर एडी. A1 the formula is what? 1 plus RF by R1 into R3 upon R2 plus R3. This is the A1 minus A2. What is the A2 minus plus RF by R1? Right, and that is the value of the AD. That is the value of the AD. And what was the value of the AC? AC is equal to A1 plus A2, that is equal to equate it to 0 and you will get the condition, right? For CMRR is equal to infinite, AC should be equal to 0 and you will get the condition RF by R1 is equal to R3 by R2. This is the condition for AC should be equal to 0. Now put this condition in this equation AD. When we are going to put this condition in AD, you will get AD here. Put this condition in AD, you will get R3 by R2 should be replaced by the RF by R1. So AD will become half 1 plus RF by R1. You can write 1 upon R2 plus, इससे R3 से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस R2 by R3 प्लस RF by R1. राइट, इसको अरेंज करो, रिप्लेस द R3 by R2 by RF by R1, it will become R1 by RF. R1 by RF. Arrange it. Into राइट. अब यहां पर देखो, ये RF by R1, ये RF by R1, ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा RF by R1. तो व्हाट इज द गेन AD by AD? RF by R1.
RF by R1, ऑलवेज रिमेंबर। तो चलो थोड़ा सा मैंने कर लिया, बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं थी मेरी भी, मुझे डर लगता है सब कैलकुलेशन से आजकल, पहले नहीं लगता था, लेकिन चलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर इन दिस डायग्राम, ऑलवेज रिमेंबर इन दिस डायग्राम, फर्स्ट check the condition. Always check the condition. If the RF by R1 is equal to R3 by R2, RF by R1 is equal to R3 by R2, directly you can say AC is equal to 0, CMRR is infinite, output will become ADVD, non-inverting terminal voltage minus inverting terminal voltage, this voltage minus that voltage, and where the AD is RF by R1. AD is RF by R1 और R3 by R2, both are equal. तो डायरेक्ट आपका AD आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हार्डली 30 सेकेंड्स में, हार्डली 30 सेकेंड्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सर्किट, आइडियल एंड प्रैक्टिकल कंडीशन गाइस। दिस इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, सॉल्व करोगे? देखो बताओ जरा, इट इज आइडियल और प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर, चेक द कंडीशन एवरीवन। आइडियल और प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर, Practical. check the condition first of all. Swamik, yes, practical condition, because that ratio is not satisfied, 8 by 1, 5 by 1. So V1 is given as 3 volt, V2 is given as 2 volt. So directly use the formula A1 V1 plus A2 V2 and get the output. बताइए क्या है? Apply the superposition theorem. Straightforward, apply the superposition theorem. B is the answer, 6 volt. Kamini is giving the B. Priyasa Paul, you are giving the 6 volt. तो बन रहा है, सबसे समझ आ रहा है क्या है ये? दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर, द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सबसे पहला काम करना है आपको, कंडीशन को चेक करना है। तो आप कंडीशन हमेशा ध्यान रखो, ये RF, ये R1, ये R3, ये R2। तो आप देखोगे 5 by 1 इज नॉट इक्वल टू 8 by 1। तो ये जो कंडीशन है RF by R1, इट इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, अब जब सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करना है? V0 लिखिए, सीधा आउटपुट लिखना है ना एक साथ, 1 प्लस RF by R1 इंटू VP। व्हाट इज द VP? R3 by R2 प्लस R3 into V1 minus RF by R1 into what? V2 minus RF by R1 into V2. In one step, 1 plus RF 5 by 1 into R3, 8 divided by 1 plus 8 into V1. V1 is what? 3 into V2. V2 is 5 by 1 into what? 2.
ओके, सॉल्व कर लीजिए और यू विल गेट द 6 वोल्ट. दिस इज द आंसर. यस, दिस इज द 6 वोल्ट. नाउ देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या इसमें रेशियो सेटिस्फाइड है, यस और नो? In this case, both the inputs are same, V1 and V2. If the ratio is satisfied, output will be 0. But that ratio is not satisfied. This is not an ideal differential amplifier. Otherwise, you are going to get the 0 answer. It is not given 0. It is not an ideal differential amplifier. So please everyone solve this question assignment. Or otherwise, okay, no problem. That is again this divided by this divided by this. That is not equal. So what you can do directly, you can write 1 plus Rf by R1 directly. 1 plus Rf by R1, 1 plus Rf by R1 into R3 by R2 plus R3 into V1. So V1 to 1 volt minus Rf by R1 2 by 1 into 1 volt. So it will become 3 by 2, that is 1.5 minus 2 माइनस है. तो इन वन स्टेप हो गया 30 सेकेंड्स में सॉल्व. इज इट क्लियर? माइनस 0.5 वोल्ट. क्या हो गया? कहाँ क्या हो गया? लफड़ा कर दिया मैंने कुछ क्वेश्चन. तो ये तो लिखा है V2 की वैल्यू 2 वोल्ट. दिस इज द वैल्यू इज द 2 वोल्ट. क्या प्रॉब्लम है? अरे V1 कहाँ से 2 वोल्ट होगा? ये तो V1 है. नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज को मैं V1 बोल रहा हूं और इन्वर्टिंग को मैं V2 बोल रहा हूं. शुरू से तो यही किया मैंने. नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग वो कुछ फर्क नहीं पड़ता. बस आपको फॉर्मूले में याद रखना है. यहां पर पहले आएगा नॉन इन्वर्टिंग, ये आएगा इन्वर्टिंग. इसलिए तो इतना डेरिवेशन करवाया हूं कामिनी. अब इसको मैं मेरा नाम लिख दो संजय राठी, यहां पे आप अपना नाम लिख दो. क्या फर्क पड़ता है? आपको बस ये याद रखना है दैट फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड विद द नॉन इन्वर्टिंग, सेकंड टर्म इज मल्टीप्लाइड विद द इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज. ओके, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है. A differential amplifier is constructed using an ideal op-amp as shown in the figure. The values of R1 and R2 are 47 and 470 respectively. Are 47 and 470 respectively. The input impedance seen looking into the terminal V1 is 47. Which statements are correct? MSQ है. Which statements are correct? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन. तो बताइए कौन कौन सा सही है. तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है. राइट, जब किसी एक के लिए इनपुट निकालते हो इनपुट रेजिस्टेंस, तो दूसरे को 0 कर दो एंड देन फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस गाइस. देन फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस. तो असाइनमेंट करना. अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कराऊंगा मैं आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर का. फिर ये देखो ये भी MSQ है फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट शोन इन द फिगर. जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बनाए थे ना, वही है. इसका आप गेन निकालो, इसको भी सॉल्व करो. MSQ, दिस इज द MSQ. देखो CMRR भी पूछा है, डिफरेंशियल गेन भी पूछा है, कॉमन मोड गेन भी पूछ रहा है. MSQ लिख लेना. मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट आंसर. एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है इसमें. बनाइएगा, बन जाएगा. थ्योरी अच्छे से पढ़ो, बनेगा.
देखो अब अगले 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। क्या आप तैयार हैं? अगले 10 मिनट लास्ट, जाते जाते कुछ अच्छा। आर यू रेडी? आप बोलोगे सर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करा, फिर से कुछ नया। भाई पूरा थ्योरी ही न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ही थ्योरी है यहाँ पर, ये समझ लेना। मैं सुबह से न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सब कुछ बढ़िया है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बात बताओ, 2 लोग गए, वो याद है 2 बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ ली। याद है बचपन में हम लोग कहानी सुने थे ना, 2 बिल्ली थी, कैट, कैट नंबर 1 कैट नंबर 2। इनको बिल्लियों को रोटी मिली, रोटी को बोले बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसके पास गई? बंदर के पास, है ना। अब बंदर ने बोला रोटी को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो देखा यार ये तो बड़ा और छोटा हो गया। फिर जो बड़ा था ना उसमें से काट के थोड़ा सा खा लिया, बोला देखो, तो जो बड़ा था वो छोटा हो गया, अब दूसरा वाला बड़ा हो गया, फिर उनमें से कुछ काट के खा लिया, और ऐसा करते करते रोटी खा ली और बिल्ली चली अपने घर। ठीक है, तो लड़ाई मत करो, कंपटीशन अपने आप से करो। अच्छा आप तो कंपटीशन कर ही नहीं सकते, किसी ने किसी का घर का एड्रेस तो नहीं दे दिया है? नहीं तो सोमनाथ चले सोमिक के पास और उसकी किताबें ही फाड़ के आ गए कि मैं पढ़ने ही नहीं दूंगा, एक कॉम्पिटिटर तो कम से कम हुआ, है ना। बोले पढ़ने ही नहीं दूंगा इसको मैं, चाहे हो जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सौमिक कब जा रहे हो ये बताओ मुझे, और एक सोमनाथ एड्रेस मत देना गलती से, ये पहुंच जाएंगे, मैंने अभी इनको हिंट भी कर दिया है। तो ये देखो यही कहानी है। अरे भाई देखो, आप जाते हो ब्लड टेस्ट करवाने, ठीक है, गए ब्लड टेस्ट करवाने। ब्लड टेस्ट करवाते समय कितने लोग हैं, ईमानदारी से बोलो, जो ब्लड देना चाहते हो कि यार ब्लड टेस्ट, इतना बड़ा इंजेक्शन, कहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बिना ब्लड निकाले ही कुछ हो जाए, या फिर निकाले तो थोड़ा बहुत निकाले? यस और नो, टेल मी। चाहते यही हो कि नहीं चाहते हो? पहले भाई साहब ब्लड टेस्ट होता था तो 1 लीटर ब्लड निकाल लेते थे, फिर धीरे से आया 100 ml, फिर और कम होते होते इतनी बड़ी बॉटल में निकालते हैं। व्हाट इज द आइडियल क्वांटिटी ऑफ दैट ब्लड, राइट? व्हाट इज द आइडियल क्वांटिटी ऑफ दैट ब्लड, टेल मी। क्या होनी चाहिए? अरे हंसी मजाक चल रही थी। राकेश, टफ टू हैंडल, ओके। देन देखो राकेश बोल रहा है कि अगर कृष्णा को पता चल गया तो मेरी तो किताबें और सब फटने ही वाली है। देखो मैं जानता हूँ ये कृष्णा को तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और माखन चोर तो हम बोलते ही हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझो, क्रक्स। वो तो बताइए, आप सबके सब जवाब देना। आप ब्लड टेस्ट देना चाहते हो, ब्लड टेस्ट, तो कितना अमाउंट ब्लड देना चाहते हो? आइडियली आप क्या देना चाहते हो? तो आप बोलोगे सर 0, देना ही ना पड़े और टेस्ट हो जाए और पता चल जाए कि डेंगू है कि मलेरिया है कि क्या है। तो अभी और भी ऐसी किट निकाल रहे हैं जो आपके स्वेट से, जो पसीने से है, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बीमारी है। ये भी चल रहा है ना, रिसर्च है ये। तो वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर आए 2 सिग्नल लड़ते लड़ते। एक बात बताओ, V1 और एक है V2। बोला भाई देखो हम 2 हैं, हमारा डिफरेंस बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द V1 एंड V2 एंड एम्पलीफाई द डिफरेंस ओनली। तो डिफरेंस बताने के लिए आए तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आ गए। देखो क्या हो गया इनके साथ, क्या हो गया एक्चुअली, कितने नाराज है ये। देखना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल गेट द आंसर फॉर योर असाइनमेंट क्वेश्चन। आंसर फॉर योर असाइनमेंट क्वेश्चन नाउ। This is the R3, this is the R2, this is the V1, this is the V2, this is the R1 and this is the RF. Okay, they want that the difference between these two should amplified by this differential amplifier. बोले हो जाएगा। अब हो जाएगा, वो तो हो गया, जो डिफरेंस तो निकाल लिए, बट व्हाट इज द करंट गिवन बाय दिस, दैट इज द ब्लड टेकन बाय द V1. तो दिस V1 will provide a current I1. What is the current enter into the op amp? 0. So what is the current given by the V1? I1, and I1 is given by V1 upon what? R2 plus R3.
And what is the resistance seen by the V1? The resistance seen by the V1 is V1 upon I1, that is nothing but R2 plus R3. And this is the finite resistance. And that's why V1 should provide what? Current. V1 नाराज हो गया, हाँ मेरा आया था डिफरेंस निकालने, मेरा तो खून ही निकाल लिया तुमने, खून चूस लिया ये देखिए. अब बोले V2 की क्या कंडीशन है? Then V2 के लिए take the V1 is equal to 0. When I am making the V1 is equal to 0, this will become 0. Now this is the 0, that's why this is 0, this is the R1 V2. What is the current given by that? Again, this is also given current V2 by R1. So what is the resistance seen by the V2? The resistance seen by the V2 is V2 by I2, that is nothing but R1. Okay, the resistance seen by the V1 is R2 plus R3, and that's why should provide the some current I1. And V2, what is the resistance seen by the V2? R1, and that's why V2 should provide the current I2. दोनों को करंट देना पड़ रहा है. थोड़ी देर बाद दोनों गिर गए, बोले यार डिफरेंस निकालने लाए थे कि मेरा खून निकालने लाए थे? तो बताओ, इज इट आइडियल कंडीशन? टेल मी गाइस, इज इट आइडियल कंडीशन? What is the ideal condition? The current given by the V1 and the current given by the V2 should be equal to 0. If the current given by the V1 and current given by the V2 should be equal to 0, means what? The resistance seen by the V1 and V2 should be equal to 0. If suppose V1 and V2, V1 and V2 are giving the current to this amplifier, differential amplifier, means we can say that amplifier will load the input V1 and V2. That amplifier is taking current from the V1 and V2. That is called loading effect. उसने उसको लोड कर दिया है, बोल रहा है भाई मैं डिफरेंस बताऊंगा, मेरे को करंट दे दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. ये हो गया, ये तो है ना. तो नहीं हो सकता ऐसा. तो बोले हमको नहीं देना है. अब बताओ कैसे करें? Then what we are doing, just we are using the one device that is called what? Voltage follower. Voltage follower. So voltage follower is nothing but, what is the gain for the non-inverting operational amplifier, guys? What is the gain for the non-inverting operational amplifier? This is the VS. The gain for non-amplifier is 1 plus RF by R1 into what? VS. This is the output. If RF by R1 is very less as compared to R1, or RF is very less as compared to R1, you can neglect this term and output voltage will become exactly equal to what? Input voltage. Output voltage will become equal to what? Input voltage. So what is the closed loop gain? Become 1. What is the phase shift? 0 degree. It is the lowest gain for non-inverting operational amplifier, and that is equal to what? 1. It is the lowest gain of the operational, and that is equal to what? 1. Is it clear? Then this is called what? ये क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या हो गया यहाँ? मेरी क्लास दिख रही है कि नहीं दिख रही है? Okay. Now is it clear? So this is the RF, this is the R1, this is the 1 plus RF by R1, and this is the VS. Then it is called output voltage will follow the input voltage. When the output voltage follow the input voltage, this is called voltage follower. So what is the symbol for the voltage follower? This is the symbol for the voltage follower. This is the voltage follower. Vp is equal to Vn is equal to V0. This is the Vs, this is the Vs, and that is the Vs. What is the closed loop gain? 1. Lowest gain, and that's why it is the highest bandwidth.
Lowest gain, that's why it is the highest bandwidth. This is called voltage follower. And what is the current given by this? Current given by this is 0. Current given by this is 0. So what is the resistance seen by this? Resistance seen by this is what? Infinite. So what we are doing, just we are connecting the 2 voltage follower first, second, and this is the third one. Now this is the differential amplifier. And here we are connecting the V2. Here we are connecting the V1. This is the feedback. And that is connected here. This is the feedback. And that is connected here. Now tell me, what is the resistance seen by this? Infinite. What is the resistance seen by this? Infinite. So what is the current given by this? 0. What is the current given by this? Is 0. And here the voltage will become V2. Here the voltage will become V1. Again you will get the same output. So with the help of this buffer, we can avoid the loading effect, guys. We can avoid the loading effect. So this is the circuit. Differential amplifier, we are using the buffer. We have to use the extra 2 operational amplifier. अब देखो आज का टाइम तो हो गया, इसीलिए in next time we will discuss the differential amplifier. Please up to this point try to understand how we can avoid the current, and I have given you the enough hint to solve that question. Next time we will solve this diagram. This one. This is the differential amplifier. So try to understand that, try to solve this question then till this is the assignment. Same logic. What is the input resistance seen by this? Infinite. What is the input resistance seen by this? Infinite. What is the current given by the 1 volt battery? 0. What is the current given by the 2 volt battery? 0. This is the non-inverting op amp. This is the non-inverting op amp. Or this is the differential amplifier, guys. This is the plus, this is the minus, and this is the differential amplifier. Ratio is satisfied. Try to solve this क्वेश्चन गाइस. तो इसको पूरा अभी हमको 15-20 मिनट और लग जाएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा. ये असाइनमेंट है. तो देखो बफर कैसे हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस, तो क्या प्रॉब्लम क्या थी पता है? जो बेसिक में देयर इज अ करंट गिवन बाय द V1 एंड V2, देयर इज अ लोडिंग इफेक्ट. तो लोडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए ही हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं. ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं. तो होप यहां तक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा गाइज. अब आपका एकदम से लेवल बढ़ जाएगा अगली क्लास में. Now we are going to enter into what? Already we have dealt with what? 3 mode. Inverting mode, basics of the inverting mode, basics of the non-inverting mode, and what? Differential amplifier. Now in next class in 15 minutes you will learn about the instrumentation amplifier or amplifier with the non-inverting amplifiers. Now I have discussed the voltage follower. In next class we are going to discuss what? Voltage to current converter, current to voltage converter, and then what we will enter into the integrator, differentiator, logarithmic amplifier, anti-logarithmic amplifier. Till then guys, note करो आपको नेटवर्क की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है. यस एवरीवन है अवेलेबल. भाई मैं बोल रहा हूं अगर आप एनालॉग को एंजॉय करना चाहते हो तो नेटवर्क कई लोग कर चुके हैं, जिनका नहीं हुआ है मैं बता देता हूं. नेटवर्क्स की रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल है तो आप नेटवर्क में से थोड़ा सा KCL KVL जो बेसिक है मैथ्स वाला थोड़ा बहुत कर लीजिए. थोड़ा सा थेवेनिन्स देख लो, हल्का फुल्का देख लो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और साथ में फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट देख लो. फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट RC सर्किट ओनली, नॉट RL सर्किट, RC सर्किट ओनली.
तो मैं रिवाइज करवाऊंगा एनालॉग में, लेकिन अगर आपने पहले से देख लिया आरसी सर्किट तो आप इंजॉय करोगे। अभी 2-3 दिन है आपके पास, 15th है, 16th है, 17th है, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। आप यहां तक पहुंच सकते हो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट तक। 2 पोर्ट नेटवर्क बाद में आएगा, तो उसके बाद 2 पोर्ट नेटवर्क करना, दैट इज द ट्रांजिएंट, बिकॉज एनालॉग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट आरसी सर्किट। तो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द आरसी सर्किट, पूरा आरसी सर्किट आएगा, उसका कॉन्सेप्ट आएगा। अभी है 2-3 क्लास में, तो उस तक के आप जब तक कवर कर लो तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि कैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, एनालॉग में चीजें वेवफॉर्म कैसे बन रही है। एनालॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एनालॉग साथ में लेंदी भी है। ओके, सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे बताओ? जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ थोड़ा सा तो चाहिए भाई आपकी तरफ से भी, कुछ रिक्वायर्ड होता है सब्जेक्ट को एंजॉय करने के लिए, तो यहाँ भी इसको जरूरत है मुझे। एक होता है कि मैं क्लास से पहले बता दूंगा कि दिस इज द आरसी सर्किट, एक होता है क्लियरिटी होना। तो अगर मेरी आप नेटवर्क की क्लास देखोगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आरसी सर्किट क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या है, स्टडी स्टेट क्या है, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी एनालॉग अपने अब लेवल पे जाएगा। ये 4 बेसिक क्लासेस थी। तो अब आप बताओ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को स्टार्ट करने का डिसीजन सही है? वी हैव स्टार्टेड द एनालॉग विद ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सबको कंफर्टेबल लग रहा है? मैंने आपको पहले ही बोला था, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। You will get the command over the operational amplifier without getting the command over what BJT and MOSFET. Don't worry about that. First of all, we will follow the proper sequence, get the command over op-amp, then we will enter into the rectifier, precision rectifier, clamper with op-amp, and so on. Okay then, thank you. कल EDC की क्लास है भाई, नोट कर लेना। PDF needed to be uploaded. Yes, I am just after the class. I'm asked them to upload, otherwise I am going to upload. Okay, Rakesh? Okay then, thank you. And again, happy Independence Day.